Hello, hi, good morning. Welcome to Oliveboard. This is Aditya. I hope I'm audible and visible to all of you. Good morning, good morning, good morning, everyone. Very good morning to all of you. कैसे हैं सब आप? All well? How was the weekend? Although मैं कल आपसे मिला था, we have MCQs. हमने 11 से 18th of 18 तक के 11th of May से 18th of हमारे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कल डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ में। तो कल भी सेशन लाइव था, जिन्होंने मिस किया हो वो देख लीजिए। मैं आज क्या करूंगा, 18, 19, 20 इनका जो न्यूज है इंपॉर्टेंट उसको कवर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे 17th के, दे वर रिमेनिंग, सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन द सेशन। चलिए देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या हैं। First, I need the confirmation from you guys that everything is fine. I am audible and visible to all of you guys clearly. कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में दोनों ठीक चल रहे हैं। सो वी कैन स्टार्ट द सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार नाम देख लेते हैं सारे लोगों के जो आ चुके हैं अभी सेशन में। चलिए एक बार थोड़ा लाइक जरूर बढ़ा दीजिएगा प्लीज आप लोग, है ना। गुड मॉर्निंग जॉय, ललिता, नीतीश, सोमरई, सोनम, दिव्या, साहिल, नवीन, राहुल, कौशल, वेरी गुड मॉर्निंग। अनविज्ञ, पल्लवी, बहुत बढ़िया। शाश्वत, गुड मॉर्निंग। मोना, दिव्या, मानस, वीना, आरती, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर सेशन को। न्यूज काफी ज्यादा रहेंगे आज के, तो एमसीक्यूज थोड़े कम करेंगे, ठीक है। विल डिक्रीज द नंबर ऑफ एमसीक्यूज बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यूज। हाइलाइट्स बता देता हूं पहले आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनके। आईएफसी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, विच इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. It is a part of World Bank. So IHC extended $500 million loan financing to HDFC Bank in India. This loan will be used to utilize for the purpose of, will be utilized for microfinance in India. What is the meaning of microfinance? What is the limit of microfinance loan? That all we are going to discuss. With that, we need to remember that IFC provided $500 million financing to the HDFC in India for the purpose of microfinance. United Nations revised growth rate of India to 6.9%. तो 6.9% का growth rate prediction, GDP prediction, and 5.6% of inflation prediction given by the United Nations. तो ये भी एक important point बन गया। आगे India's foreign exchange reserve jumped to 2.56 billion to 644 billion. तो इंडिया का जो foreign currency reserve हो गया है वो 644 बिलियन हो गया। ऑल्दो इट गेट चेंज्ड इन एवरी 15 डेज, 15 दिन में ही आपका डेटा चेंज हो जाता है। दिस इज द डेटा टिल 10th ऑफ मई, 10 मई तक का डेटा है। एंड विल बी गेटिंग अराउंड 25th ऑफ, मतलब विल बी गेटिंग a new data for 15th of May, then another data will come for around 22nd और 25th of May. तो ऐसे यार 15-15 दिन में आरबीआई हमको डेटा देता रहता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड शॉर्ट टर्म रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट अप बाय 75 बेसिस पॉइंट। तो 75 बेसिस पॉइंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई ने एफडी पर इंक्रीज किए हैं। तो जिन भी घरों में आपके पेरेंट्स की एफडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, उनको एक बार इन्फॉर्म कर दें, दे कैन चेक दैट देयर एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट इंक्रीज्ड. DPIIT, Department of Promotion, Industry and Internal Trade, report over 7 million transaction on ONDC platform in April 2024. 7 लाख से ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन, 70 लाख से ज्यादा जो है वो ट्रांजेक्शन हुए हैं। डीपीआईआईटी ने डेटा प्रेजेंट किया ऑन द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। क्या होता है ओएनडीसी, उसके बारे में बात करेंगे। पोर्टर बिकेम इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न फॉर द ईयर 2024। 2024 में वापस से यूनिकॉर्न बनने की एक जो जो सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है। नाउ वी हैव अ न्यू यूनिकॉर्न इन द ईयर 2024 फ्रॉम इंडिया, नेम इज पोर्टर। अर्लियर दिस ईयर रिफोर्स एंड ओला वेंचर कृतुम, ये दो कंपनीज और आपकी यूनिकॉर्न बनी थी। इंडिया इज ऑन द फर्स्ट रैंक इन द एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in Asia Pacific region, report issues by Deloitte. Deloitte is one of the consultancy firm, top 4 में इनको गिना जाता है Deloitte को। Deloitte को आवाज कम है क्या भाई? बाकी लोगों को साउंड का कुछ इश्यू समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा। एक डेंजरस न्यूज है which is a news of global warming. Venezuela became first country in the world to lose all of its glaciers.
अपने सारे ग्लेशियर खो देने वाला पहला देश विश्व का वेनेजुएला इन द मॉडर्न हिस्ट्री. Shocking, surprising, and a very, very dangerous news that what we are going to leave for the next generations if global warming will not be under control. तो ये एक बड़ा न्यूज है वेनेजुएला से रिलेटेड. इंडिया यूएई कंक्लूड द मीटिंग ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट, और अभी हमारे लिए एग्जाम रिलेवेंस क्या इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कवर करते हुए चलेंगे. बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इट विल टेक हाफ एन आवर 1 hour टू डिस्कस ओनली दिस टॉपिक. तो जितना एग्जाम रिलेवेंट अभी है उसको कवर कर लेंगे. एमसीक्यू रिवीजन, एज आई हैव टोल्ड यू टुडे, नंबर ऑफ न्यूज आर मोर, so we'll covering less number of MCQs that will be updated in the next 2-3 days. Okay, consider the correct statement about the LIC news, but very, very important point. LIC news: in the recent times, Securities and Exchange Board of India extended the LIC deadline to achieve the minimum public shareholding of 15% for 3 years. LIC, state-owned insurer giant, now will get the time till 16th of May 2027 to fulfill this obligation. Government still need to disinvest 6.5% stake in the LIC over the next 3 years to enable reach the shareholding threshold. क्या आंसर बन रहा है सर? ऑप्शन नंबर, मैं बता देता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक लाइन में आपको समझ आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग. अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. Any company comes to the stock market for the first time, this process is called IPO, initial public offering. Now the rule is company need to come with minimum 5% at the time of listing. At the time of listing, company need to come with minimum 5%. I'm telling you normal rules, okay? 5%. Then within 3 years, means at the completion of 3 years, that company need to achieve 10% public shareholding. मतलब 5% और बढ़ाकर 10% उनको ओवरऑल सेल कर देना है टू द पब्लिक. एंड in 5 years they need to sell minimum 25%. This is the overall criteria. Means company comes to IPO, that company should have minimum 25% public shareholding in 5 years. So ये rules हैं. I hope you are getting my point. In case of LIC, listing was done at 3.5%. लिस्टिंग हुआ है 3.5 से, नॉट 5% से. ये हुआ है आपका लिस्ट. ठीक. नाउ टू अचीव द टारगेट ऑफ 10%, दे आर गेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स? So they are getting the duration of 3 year more extension. 3 plus 3, 6 year time they are getting. इनको मिल रहा है 6 साल का समय to achieve 10%. And to achieve 25%, they are getting the duration of 10 years. 10 years. So they have time till 2032 to achieve the overall 25% of criteria. I hope you are getting my point. तो यहां पर आपका आंसर बनने वाला है अभी के लिए 10% for means 3 year extension for achieving the target of 10%. तो 10% का टारगेट अचीव करने के लिए इनको कितना टाइम ड्यूरेशन मिल गया है अभी? Another 3 year, that is 3 plus 3, total 6 year time duration. पूरा न्यूज क्लियर? एक बार सीसी लिख देना चैट बॉक्स में. मैंने क्राइटेरिया, इफ आई वाज एबल टू सक्सेसफुली एक्सप्लेन यू द क्राइटेरिया for all big companies goes in the same format. It is only exception for LIC. Yes, Shashwat, it is a exception for LIC, not for all big companies. Every big company need to ask for SEBI for such type of relaxation if they will get, if they want. LIC was listed on 17th of May 2022. In December,
finance ministry granted LIC one time exception from 20% 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल टिल विच ईयर? कब तक के लिए इनको एक्सटेंशन मिल गया है, रिलैक्सेशन मिल गया है टू अचीव 25% ऑफ शेयर होल्डिंग? इसका आंसर बताइएगा। या क्लियर था न्यूज वाला लास्ट वाला? या इसका आंसर क्या बन रहा है आपका? 2032. So till 2032 LIC is getting the time or extension to achieve the target of 25% of public shareholding. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को ये वाला पॉइंट। LIC related points are there, the revision points which you will be able to get from the PDF. ये आपको मिलेंगे PDF से। PDF will be available on the Oliveboard application. OB application पे मिल जाएगा, और you can get it from GA Genius Telegram group. तो टेलीग्राम में जाना, GA Genius सर्च करना, and you will be able to find it. If you want to connect with me, Aditya sir OB is my ID. ये मेरा ID हो गया, ठीक? तो ये पॉइंट हो गया, PDF जरूर डाउनलोड करें। Which company partnered with Lanka Pay? Lanka Pay to allow its users to pay using UPI across Sri Lanka. श्रीलंका के साथ UPI transactions मैनेज करने के लिए भी रिसेंटली किस कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है लंका पे के साथ? तो करेक्ट आंसर है फोन पे लंका पे। फोन पे इंडिया, लंका पे श्रीलंका, इनका कोलैबोरेशन हुआ है। फोन पे इज अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एंड समीर निगम इज द सीईओ ऑफ फोन पे। इन्होंने नेपाल के भी एक कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और फोन पे का कोलैबोरेशन हुआ था होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ, होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ, HAN के साथ, राइट? इनका इनका भी कोलैबोरेशन हुआ था। नेक्स्ट है, the total export merchandise services in April 2024 estimated at 64.56 billion, surge how much percent? 6.88% से इंक्रीज हुआ है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा। रीजन, when we will be writing the examination in the month of May, mains examination in the month of September, so we need to cover July, August, September, June, July, August, September, such type of data, 4 महीने वाला जो रूल चलता है हमारा वो। Consider the correct statement about Sela tunnel. This is important, extremely important question, extremely important for RRBPU examination. Sela tunnel is constructed by BRO, officially recognized as the highest tunnel in the country. Okay, it is a 2.598 kilometer tunnel situated at the altitude of 15,000 feet at Tejpur Tawang road. So this is wrong, height is wrong, and height they will be asking anyhow in the examination directly or indirectly. It is located at the height of 13,000 feet, not 15. It is located in Arunachal Pradesh. The statement 1, statement 3 are correct, second one is wrong. तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था आपका, मैंने डिटेल में डिस्कशन किया। 825 करोड़ रुपए के कॉस्टिंग से इसको बनाया गया था, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो ऑल दीज थिंग्स वर इंपॉर्टेंट, राइट? सारा इंपॉर्टेंट था। मैं क्विकली होमवर्क के क्वेश्चंस चेक कर लेता हूं और उसके बाद फिर आपको होमवर्क देकर आगे मूव करूंगा आज के न्यूज पर, ठीक है? वेट करना जब तक, बस 1 मिनट लगेगा। NPCI भारत बिल पेमेंट सिस्टम tie up with which bank under the travelers enable national common mobility card? Simple and important, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन हुआ था NPCI भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। सेकंड है, रोजर पे इन द पार्टनरशिप विथ which bank recently collaborated into UPI infrastructure offering UPI switch to its customer. So UPI switch option launched by Airtel Payment Bank. UPI switch option launched by Airtel Payment Bank. Third, which company have launched the premium payment services on WhatsApp platform? A type of payment facility that you can directly make the payment of insurance policy on the WhatsApp. This facility was launched by Tata AIA. Tata AIA खतरनाक काम कर रहा भाई। अभी रिसेंटली इन्होंने सैटेलाइट इंश्योरेंस लॉन्च कर दिया, became the first company in India. टाटा जनरल इंश्योरेंस, AIA जनरल इंश्योरेंस, AIG, दैट इज टाटा AIG ने किया है लॉन्च, ठीक है? तो उन्होंने लॉन्च किया पहला सैटेलाइट इंश्योरेंस इंडिया का, तो बड़ी बात है। सो सिमरन, अमन, नेचर लाइफ, मनु, अजय, हर्षा, अनुहा एंड नवल, ओके, रचना, रुद्र, दिव्या, देन कुहिका, रुद्रा,
शिवानी, मानस, विनय, Pankaj, Arthi, Arita, then Goku, Milan, Techni Genius. Thank you guys. And yes, Rashmita was asking, sir, is it sufficient for LIC insurance examination? Any exam in banking, insurance category you're writing, my current affairs sessions are completely dedicated for these. Not for SSC, not for state services. मैं नहीं कर रहा हूं उनको टारगेट, मेरा है फाइनेंशियल सेक्टर. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, my sessions will be more than enough and targeted to these examinations only. So स्वरूप दास जी, thank you. होमवर्क क्वेश्चंस फॉर टुमारो कल के लिए ले लीजिए फटाफट से. होमवर्क के क्वेश्चंस क्या है? हाँ, वो AIG था, करेक्ट है. सो कल के लिए होमवर्क के क्वेश्चन. सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट ऑफ रुपी फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी रिसेंटली? इजी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में जाएगा आपका. विच म्यूचुअल फंड रिसेंटली ज्वाइन हैंड विथ एन पैराडिग्म an AI generated experimental learning program? Second, insurance sector attract massive 54,000 crore FDI in the last 9 financial years. What is the limit of FDI in the insurance sector? Current से स्टैटिक को मूव करने वाला क्वेश्चन है. UIC AO का इंटरव्यू बैच लाइव है. इसके साथ साथ अब PNB क्रेडिट ऑफिसर का भी इंटरव्यू बैच आपका लाइव है. ये रहा PNB SO क्रेडिट ऑफिसर batch is live and I'll be taking the session, as you know that. And now we have the expert from Punjab National Bank as well. So PNB के हमारे पास ex panel member हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से लीड करेंगे as a ex panel member. So you can inform your friends, those who are preparing for this, that one stop solution for the interviews will be your own Aditya sir. Use coupon code Aditya for availing the maximum discount over the batch. आते हैं आज के न्यूज में. न्यूज नंबर 1, IFC. सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विकली वर्ल्ड बैंक का. सो वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड बैंक, under the World Bank group we have IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, IDA, International Development Association, IFC, International Finance Corporation. Let's talk about these three quickly. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, it provide loan to government of any nation. So for example, government of India can take the loan from World Bank by the return guarantee that government of India is responsible to return this money after this much years at this much rate of interest, whatever they have negotiated. So government of any nation, not only India, any other nation, government can borrow loan from IBRD on their return guarantee. This is what the IBRD do. IBRD is the principal organization of World Bank. Most powerful organization of World Bank is IBRD. So World Bank is also known as IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Second organization is IDA, International Development Association. It is also known as soft loan window of World Bank. Why it is called soft loan window? Because it provide loan at 0% rate of interest, but only to the developing and underdeveloped nation. Repeating again, developing and underdeveloped nation. They do not provide loan to developed nation. So rich countries, big countries, they cannot take the economically big countries, they cannot take the loan from IDA. Third one is IFC. IFC provide loan to finance in the term of finance to the private sector. So there are 3 organizations which work for the lending facility. Out of 3, only IFC provide loan to finance, that is private sector. Now remember, SDFC is a private bank. So which organization of World Bank provided loan to HDFC? SDFC is private. If you know the logic, okay, IBRD provide loan to government. IDA provide loan to the developing or underdeveloped nations, government of that nations for the development project. IFC provide loan to the private sector. SDFC is private. Put the answer. What about other two? There are 2 more organization. 2 और organizations हैं यहाँ पर. एक का नाम आता है आपका MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, and एक organization है आपका ICSID, International Center for Settlement of Investment Dispute. So these
two organizations are working to increase the business in the world with the support, collaboration in सब चीज. They do not provide any type of lending facility. कोई lending facility नहीं है. अब आओ आप न्यूज पर. अभी क्लियर हो गया व्हाट इज आईएफसी. So International Finance Corporation, which is an arm of World Bank, provided $500 million loan to which bank? HDFC Bank. This loan amount will be utilized by HDFC Bank for the micro loans in India, small loans in India, less than 1 lakh rupee loans in India. So this amount will be utilized by HDFC Bank for the micro loans in India to underserved women in the rural and semi-urban India. Basically, the loan will be provided to self-help group, joint liability group in India. भारत में जो महिलाएं, जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का पार्ट है, उनको ये लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो लोन्स. बहुत बढ़िया अनभिज्ञ. Sir, IMF is not under World Bank. No, IMF is a separate organization. World Bank is a separate organization. So World Bank work for lendings, IMF work for monetary assistance or monetary policy support. So they will, IMF is more about providing the strategy, how to improve your economy. So IMF will support you that how to improve your economy. IMF only provide loan in that case when all your windows are closed or when already your project is running and the fund is getting short in that already running project. You already borrowed money and now your fund is getting shorted. So in that case IMF provide loan. तो IMF normally loan provide नहीं करता है, वो इमरजेंसी केसेस में प्रोवाइड करेगा, तो उसका लेंडिंग का काम नहीं है. ठीक है, वापस आओ न्यूज पर आते हैं. तो IMF इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक इज अ सेपरेट, बोथ आर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाँ, दिस लोन विल बी प्रोवाइडेड. एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. IFC 500 million, HDFC माइक्रो लोन्स इन इंडिया, माइक्रो लोन इन इंडिया लेस देन 1 lakh rupee. And according to the definition of Reserve Bank of India, what is the meaning of microfinance? So microfinance defined collateral free loan given to a family where the family income is less than 3 lakh rupee yearly. ऐसी फैमिली जिसका ईयरली इनकम 3 लाख से कम हो, उस फैमिली को दिया गया लोन क्या कहलाएगा? आपका माइक्रो फाइनेंस. ये आरबीआई का डेफिनेशन. बैंकिंग डेफिनेशन, लोन प्रोवाइडेड अप टू 1 लाख रुपी कैन बी कंसिडर्ड एज अ माइक्रो लोन. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल कमिंग फ्रॉम द सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर लोकेलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बोलते हैं ना संगठन में शक्ति है. तो व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? इट इज अ संगठन, it is a sangathan, it is a group. So these people come together and what they do is they can open the bank account. All together they can open a bank account for the savings of their members, and this fund can be utilized in the form of loan if a member required. Self-help group can be a group of 10 to 20 members. It can be a group of all men, it can be a group of all women, it can be a group of mixed of man and woman. This loan was targeted to women led self help group. तो ये जो अमाउंट अभी आया है ये women led self help group से आया है. What is the difference between self help group and joint liability group? देखो self help group का बेसिक ऑब्जेक्टिव है savings that coming together and promoting the savings in a group, कि सेव करना हम प्रमोट करें. We can start a small business and from that business the profit which we are generating that we can save for us, we can save for the group. So that is what the objective of self-help group. Joint liability group is focused on loans. So 3 4 5 people came together, 4 people came together and they are taking the mutual guarantee of each other. भैया मैं इसकी भी गारंटी लेता हूँ, इसकी भी लेता हूँ, इसकी भी लेता हूँ, इसकी भी लेता हूँ. तो they are taking the guarantee of each other, that provide us loan and we are the guarantor to each other. We all need loan. So that 4 people are borrowing loan from the bank by taking the guarantee of each other. That is called joint liability group. तो डिफरेंस होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में. आई होप शॉर्ट में आपको मैं समझा पाया. क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस, ओके. चलो नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट न्यूज बहुत ज्यादा है यार आज,
थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा वॉट एवर द इंपॉर्टेंट एरिया दैट आई एक्सप्लेन यू, एंड आई मूव टू द नेक्स्ट न्यूज वन बाय वन क्विकली। यूनाइटेड नेशन रिवाइज इंडिया 2024 जीडीपी रेट for at 6.9%. So for the year 2024, GDP prediction is 6.9% by United Nations. Earlier the prediction was 6.2. So there is an increment from 6.2% to 6.9%. 6.2 से increase करके कितना कर दिया? 6.9% prediction आपका कर दिया है किसने? यूनाइटेड नेशन ने। यहां तक का पॉइंट क्लियर होगा। After that, for the year 2025 also prediction they have given 6.6%, and all these predictions are going to get changed before your examination. So it is not very important to go very deep in this news. कोई मतलब नहीं है क्योंकि predictions आपके change हो जाएंगे before your examination. Next है Indian foreign exchange reserve jump 2.56 billion to 644 billion. So this is the data as on 10th of May. 10 मई तक का डेटा है. When we talk about the foreign currency reserve, foreign exchange reserve, it means we are talking about foreign currency plus gold managed by Reserve Bank of India plus other precious metal, other precious metals managed by Reserve Bank of India plus इसमें वो भी आ जाता है आपका SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट विद IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मैनेज जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स ऑफ RBI with IMF in the form of foreign currency, that is called SDR, special drawing right. There are 5 currencies under SDR. That is USA, currency of USA, dollar, so US dollar, pound, yen, yuan, एक और कुछ छूट रहा हूं मैं, यूरो. So these are the 5 currencies under SDR, special drawing right. So special drawing right considered as the currency of IMF. This is a pool of currency or a type of reserve which is managed by the countries with IMF, different countries with IMF. तो फॉरेन करेंसी एसेट में भी पॉइंट नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट ओनली, दैट द overall foreign currency reserve increased by 2.56 billion and at present it is 644 billion. अभी करंट में आपका कितना है? ये 644 बिलियन है. बस इतना आप अभी के लिए याद रखो. Near to your examinations when it is required, because this data is again going to get changed. तो जब ये चेंज हो जाएगा तो कोई मतलब रहेगा नहीं आपका अभी वाले को याद करने का. So update yourself. But near to examination will learn the data. SBI raised short-term retail fixed deposit by 75 basis point. So 25 to 75 basis point इन्होंने increase किया है rate of interest को in the different periods. So FD fixed deposit, which is a type of term deposit facility offered by all the banks in India. There are 2 types of deposits available in India, right? So in the deposit category, we can see that we have the deposit which is called demand deposit. Second one is called term deposit. Demand deposit means savings and current. Term deposit means FD and RD. So to keep very clear, Reserve Bank of India in the term deposit made changes in the rate of interest and increased the rate of interest in FD from 25 to 75 basis point in the different range. No need to learn specifically that for 1 year FD how much, 5 year FD how much. No need to learn that specifically. Next news, अगला news है सर. Next point है आपके पास. DPIIT report over. अच्छा हाँ, येन युआन पॉन्ड यूरो करेक्ट है. DPIIT report over 7 million transaction on ONDC platform in April 2024. पहले मैं आपको ONDC बता दूं. What is the meaning of ONDC? Okay, so you have used Zomato application, Swiggy application use किया है, Zomato, Swiggy in your life anytime. Amazon use किया है, Flipkart, any one of these application, they are not ONDC. These are the major market players, those who have launched their websites or applications where merchant can come and list their product. What these applications are doing? Are they
trying to sell their own product? No. On Zomato, are we buying product offered by Zomato? No. It is a product of different restaurants, right? They are listing themselves, and Zomato is a service provider which is offering merchant a platform, offering customer a platform. From this platform we can buy. Correct? This is what the business model, and they are profitable. Zomato is also profitable now. They are the profitable business. ONDC was listed as a not-for-profit company under Section 8, 2013, managed ONDC network. It was launched by Department of Promotion, Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था एक प्लेटफॉर्म, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म. दिस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मर्चेंट and customer similar type of Amazon or Flipkart type of platform where merchant can list their product and customer can buy directly without support system of these type of companies. It is also a challenge to these companies that they cannot create their autonomy in the economy, in the e-commerce sector. कि ऐसी बड़ी कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित ना कर लें, ऐसी बड़ी कंपनीज वन प्लेयर बनकर ना रह जाएं मार्केट में, उनको चैलेंज बना रहे, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था ओएनडीसी को. सो ओएनडीसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. मेन ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स. बाकी आप समझ गए होंगे कि क्या मेन चीजें मैं बताना चाहता था. तो ये समझ में आया व्हाट इज ओएनडीसी प्लेटफॉर्म. व्हाट इज ओएनडीसी प्लेटफॉर्म क्लियर है? सबको क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्टली आस्क इन द एग्जामिनेशन पर एक सीरीज लेकर आए, बहुत कंफ्यूजन है. करंट अफेयर्स या टेबल में? ठीक है यश, आई डू दैट, डोंट वरी. हाँ भाई बताओ, ओएनडीसी क्लियर हो गया? अभी न्यूज क्या है हमारे पास? ओएनडीसी क्रॉस्ड 70 लाख ट्रांजैक्शंस इन अप्रैल दिस ईयर. April this year, ONDC crossed 70 lakh transaction. Acha, today morning it came to my mind also that how a business can list themselves on ONDC network. ये मेरे भी दिमाग में आया था आज सुबह. अब मैं प्रोसेस देखूंगा, जरूर देखूंगा कि क्या प्रोसेस है, हाउ anyone want to start their own small business or anyone who is doing the business and they can list their product on ONDC. तो वो मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा जल्दी. Which company or which organization, which of the following organization signed tripartite MOU, three-party MOU? This is called three parties MOU with Prasar Bharati, ONDC, and to provide the affordable, accessible digital services. तो ये ऑर्गेनाइजेशन था आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. It work under Ministry of Telecommunication. Their main objective is to provide the telecom facilities, internet facilities, the reach of internet facility, telecom facility to everyone in India. तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है. ये तीन पार्टीज ने अभी कोलैबोरेशन किया है टू इंक्रीज द रीच ऑफ ओएनडीसी. दीज थ्री पार्टीज आर प्रसार भारती टू क्रिएट द अवेयरनेस, ओएनडीसी provide the platform, universal obligation fund to provide the funding, पैसा प्रोवाइड करने के लिए. तीन ऑर्गेनाइजेशंस का अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन हुआ था. न्यूज क्लियर है सारे लोगों को? देखो ओएनडीसी क्या है, शॉर्ट में आपको बता दूं मैं फिर से. ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक तरीके का फ्लिपकार्ट. इट्स अ टाइप ऑफ फ्लिपकार्ट. इट इज अ टाइप ऑफ application where merchant can list their product and we can buy. That platform which is launched by government of India is called ONDC. वो government का platform है. Remaining these are the profit making private companies. Okay, this is your ONDC. Okay, moving to the next news. Porter became India's third unicorn for the year 2024. Third in the year 2024. Got it? So if a company cross market valuation of 1 billion and above, then we call it unicorn. If a company cross the valuation of 10 billion, then we call it decacorn. Decacorn. Swiggy became decacorn last year.
Okay, so unicorn homegrown logistic platform called Porter. I don't know, maybe you guys, anyone used Porter till now? Because I am here in Bangalore, we need to use it whenever it is required to send something from here to there. Dunzo bhi hai, Porter bhi hai. So Porter is also, if you want to send something big item, for example, one or two bags or one bed you want to send from here to somewhere else. So it is very easy and convenient to use Porter. बढ़िया है, अच्छा facility है Porter का. तो मैंने तो use किया हुआ है. So Porter has become the third unicorn with the market valuation in India this year. Earlier this year, fintech firm Perforce and Ola Krutum. These two companies already became the unicorn, first and second company to become the unicorn. Now third company is Porter. As per Traxcon, there are 113 unicorn in India earlier this month. Government of India stopped giving any data regarding how many unicorns we have in India at present. Because as per the previous data which I was able to find, it was around 67, 68 only. So now how many unicorns are there in India? It is not completely clear because everywhere you will be finding different data. There is a website of Government of India called Invest India. एक website है आपका Invest India का. उस पर आप जाकर चेक करोगे तो आपको 106, 107 मिलता है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पर जाओगे 110 प्लस मिल जाएगा. तो डिफरेंट एरियाज यू विल बी एबल टू फाइंड द डिफरेंट डेटा. बट स्टिल आई ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डेटा कि जो भी एग्जाम से पहले आपको जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा मैं कोशिश करूंगा लाकर दे दूं कि कितनी यूनिकॉर्न है. दिस ईयर 3 कंपनीज गॉट द यूनिकॉर्न, वो जरूर है आपको याद रखना. आगे आते हैं. कपिल सिब्बल इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आया था, आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा है. रवि किशन वाज द लीड एक्टर इन दैट सीरीज. दैट वाज बेस्ड ऑन द was on the court and judiciary, basically regarding to the advocates, that advocates act as the agent, a type of broker also, that they are not fighting the case by themselves, they are passing the case to the bigger lawyer and taking certain commission. So lots of things that particular series have shown. So in that series there was a complete incidents around the bar association elections. It is very similar that what is bar association. So it is a group of, it is, you know that advocates have their association, right? They have their association, very similar to taxi wala association, auto wala association, bank employee association. So advocate association is at the different areas. Now Supreme Court Bar Association is the most powerful association in India. It's the most powerful association. So who is the president of Supreme Court Bar Association? Mr. Kapil Sibbal. Everyone heard the name, right? Senior advocate Mr. Kapil Sibbal won the election of president post in Supreme Court Bar Association. He secured 1066 votes, no need to learn the number, and defeated the nearest rival and senior judge Mr. Pradeep Rai. तो राय साहब को हराकर fourth time in a row Mr. Kapil Sibbal will be acting as the president of Supreme Court Bar Association. He is a Harvard Law graduate, and Sibbal was the Solicitor General of India during 1989 to 1919, designated as the senior advocate in the year 1983. I hope you are getting my point. Yes or no? हिमांशु जी आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए ऑन टेलीग्राम. आदित्य सर ओबी इज माय टेलीग्राम आईडी. ये टेलीग्राम आईडी, इस पर कनेक्ट करिए. सेंड योर सर्टिफिकेट, आई विल चेक इट एंड आई विल लेट यू नो. ओके, तो सिंपल सा न्यूज था. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट इज मिस्टर कपिल सिब्बल, और इन्होंने हराया किसको है इलेक्शन में? प्रदीप राय जी को. प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं इसके. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप नटराजन as IDFC First Bank whole time director. So Mr. Pradeep Natarajan appointed as the whole time director for IDFC First Bank, a private banks in India. The last private bank which got the license from the Reserve Bank of India in the year 2014-15 were IDFC First Bank and Bandhan Bank. यही वो दो बैंक हैं जिनको लाइसेंस मिला था.
वी विद्यानाथन इज द सीईओ, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। अभी रिसेंटली प्रदीप नटराजन अपॉइंट हुए हैं। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक was a NBFC in the year 1997. 1997 it was a NBFC. Got the license of bank in the year 2015. Received IDFC as the banking license from Reserve Bank of India and set up as IDFC Bank. 2018 IDFC Bank got merged with Capital First, which was a NBFC. Then it became, in December 2018, it became IDFC First Bank. So previously it was formed in the form of NBFC. Got the license of bank in 2015 as IDFC Bank. 2018 merged with another NBFC, Capital First, IDFC First Bank. तो ये बन गया आपका बैंक। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। वी विद्यानाथन सर एमडी एंड सीईओ हैं इसके, ठीक है। आफ्टर दैट रीसेंट पॉइंट है, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक is the private sector bank in India, became the official banking partner of Mumbai Indians in IPL. तो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर रहा है। रिमेनिंग सिमिलर टाइप के पॉइंट्स हैं, यू कैन गो थ्रू विद द पॉइंट आफ्टर गेटिंग इट फ्रॉम द पीडीएफ। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड करना आपके लिए। अगला न्यूज है A.Y.V. Krishna and N. Venugopal appointed as the एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, 2 न्यू डायरेक्टर, कृष्णा वेणु, वी कृष्णा एन वेणु, गोपाल recently appointed as the additional directors in CBI. Although the director, the real director, the real chief of CBI is Mr. Praveen Sood. वाकई में जो सीबीआई को लीड कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर प्रवीण सूद। ये है एक्चुअल लीडर सीबीआई के। अनदर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज अजय भटनागर, रिसेंटली अपॉइंट हुए जैन 2024 he got appointed. So this name is also important because of recent appointment. Otherwise Praveen Sood name is more important क्योंकि वो रियल डायरेक्टर है, ठीक। नेशनल इंटरनेशनल स्टेट इन न्यूज टाइम ऑल्दो हमारा निकल रहा है, मैं आज थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा बट मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा सारे न्यूज। इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन द एडॉप्शन ऑफ generative artificial intelligence. Generative artificial intelligence means the use of artificial intelligence for the constructive purpose, not for the destructive purpose. betterment के लिए, वर्कलोड कम करने के लिए अगर एआई का यूज किया जाता है फॉर द बेटर इकोनॉमी, for increment in the economy, that is, then it is called generative artificial intelligence. So India is on top in Asia Pacific region in the adoption of artificial intelligence with 93% of student and 83% of employees actively engaging with the technology. इतने लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी एंड ऑल, ये सारी चीजों का यूज कर रहे हैं in Asia and Pacific region. However, it added only 50% of employee believe their managers know they use this technology. 50% सिर्फ एम्प्लॉय इंक्रीमेंट हुआ इंडस्ट्री में by artificial intelligence, so it is not increasing the employees a lot, but India is on top in term of adoption of artificial intelligence in Asia and Pacific. This was a report from Deloitte, one of the consultancy firm in the world. टॉप जो आपकी 4 कंसल्टेंसी फॉर्म है उनमें से एक है, बिग 4 में से 1 है। इंडिया यूएई कंक्लूड द मीटिंग ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया से यूरोप तक का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के ऊपर डिस्कशन मोड में है। इट वाज अ डिस्कशन व्हिच वाज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ G20 ग्रुप 20 में। सो फ्रॉम इंडिया, दैट इज फ्रॉम मुंबई इन इंडिया, this connectivity will be done to Jabali Ali of UAE. It will be connected with Al UAE. Then after that other like Saudi Arabia, Israel, Greece, slowly it will be moving to Europe. अगर countries देखें, so India, Middle East, Europe economic corridor will be connecting the countries India, UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Italy, France and Germany. So these are the countries which will be connected with this corridor. What is the news for now? अभी के लिए क्या न्यूज है? For now we have the news, recently India and which country concluded the meeting for India, Middle East, Europe economic corridor. India और UAE के बीच में मीटिंग हुआ है।
Meeting was held under Intergovernmental Framework Agreement aimed to enhancing the cooperation for the development and operationalization of this corridor. So right now the corridor is not started, it is under plan, it is there in the process for the development. अभी इसको बनाया जाएगा step by step. So it is there in the process of development. Initiative will set to provide alternative supply route, generating the efficiency, reducing the cost. तो export import का cost decrease कर देगा. This corridor show the broader understanding signed by India, US, UAE, Saudi Arabia, France, Germany, Italy, European Union during the G20 summit in New Delhi in September last year. तो जब G20 summit हुआ था तब इस पर साइन हुए that we will be okay, we will be processing it और हम इसको क्या करेंगे अपडेट करेंगे. Now this meeting is conducted in India or in UAE. Last point. ये मीटिंग आपका कहां पर हुआ है? इंडिया में हुआ है मीटिंग या फिर यूएई में हुआ है? So intergovernmental team from India, which is formed from the officials of Shipping Ministry, Waterway, Ministry of Commerce and Industry, Central Board of Excise Custom, Deen Dayal Upadhyay Port, Kandala Port, visited UAE shipping hubs from 15 to 17th of May. इंडिया की एक टीम, काफी सारे ऑफिशियल्स की एक टीम यूएई गई हुई है, and this meeting conducted in UAE, not in India. With UAE, meeting was conducted in UAE. Another news from UAE. UAE launches Blue Residency Visa. Blue Residency Visa will be given for the people, those who are working for the protection or those who are working for the betterment individually. Individuals, those who are working for the betterment of nature, especially related to marine. मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, जो समुद्री एनवायरनमेंट है, इसके बेटरमेंट के लिए और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इफ समवन इज वर्किंग and have taken the exceptionally well steps, have done something very great in the protection of environment, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है, उसको यूएई वीजा दे देगा. दिस विल बी कॉल्ड ब्लू रेसिडेंस वीजा. इट विल बी द वीजा फॉर 10 years. 10 साल के लिए ये वीजा मिल जाएगा. 10 साल रहो आप यूएई में इफ यू वांट, बट फॉर दैट यू हैव टेकन द वेरी एक्सेप्शनल स्टेप्स. ऐसा नहीं है कि छोटा सा एक पौधा लगा दिया, आज उठे सुबह सुबह एक पौधा लगा देंगे घर में अंदर और कल से पानी भी नहीं डालेंगे, वो ठीक है, फोटो खींच के भेज देंगे यूएई. आई हैव प्लांटेड अ बिग ट्री टुडे. प्लांट भी नहीं, ट्री सीधा बोल देंगे, हमने तो बहुत बड़ा पेड़ लगा दिया आज, और भेज दो भाई वीजा. तो वैसा नहीं है. जिन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, they will be getting this visa facility, 10-year visa facility, which will be called blue residence visa. किसने लॉन्च किया? यूएई ने. पुलिस स्टार्टेड ऑपरेशन मर्यादा. ऑपरेशन मर्यादा फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा इन 2024 उत्तराखंड. अभी देखो क्या होता है, पीपल गो टू उत्तराखंड फॉर द दर्शन ऑफ केदारनाथ धाम, that Shiva darshan. Now few people feel like that, very few people feel like that when we are going for the Shiva darshan, we should be almost in a hangover with the few components which are available usually in these areas, in the hilly areas. So after taking smoke and all, they are almost blank, out of their zone out बोलते हैं अभी जेंजी के लैंग्वेज में, राइट? So they are almost zone out. Operation Maryada started by the police that the darshans can be conducted smoothly in Rudraprayag, Uttarakhand. So it is a request from the police to pilgrims and tourists who consume drug to maintain the decorum in area. भैया ले लिया है ठीक है, हाँ, अब सिंपल टर्म्स में कर लिए कहें तो भाई फूक लिया है ठीक है, बट मर्यादा बना कर रखिए. That is what Operation Maryada. It is launched in which state? The answer will be Uttarakhand. Launched by Uttarakhand police in Uttarakhand. Point clear होगा, ठीक है. चालान तो काटेंगे ही, उसके साथ में रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, आप मर्यादा रखिए, हाथ जोड़कर. ऑपरेशन सद्भावना, it was launched to provide the essential aid healthcare to the North Sikkim community by the Indian Army. Bambi bucket, it was also launched in Uttarakhand. So after Bambi bucket, this is the another
ऑपरेशन विच इज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड, एक और ऑपरेशन हो गया उत्तराखंड वाला, ठीक। यहां तक न्यूज सबको क्लियर है? एक बार सीसी लिख दो चैट बॉक्स में। एक रिक्वेस्ट है, अगर इतने सारे न्यूज समझ में आए प्लीज लाइक जरूर कर देना सेशन को लीव करने से पहले। अभी मैं थोड़े न्यूज और करूंगा डिस्कस। 12th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग टू ब्लास्टर द बायलैटरल डिफेंस इन उलान बतूर। So 12th edition of India Mongolia joint working group meeting was conducted regarding increment of defense, bilateral defense between the two countries. इंडिया और मंगोलिया के बीच में डिफेंस को बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट हुआ है. इट इज अ 12th edition of meeting which is conducted, and this meeting was not conducted in India, it is conducted in Mongolia, उलान बतूर. उलान बतूर मंगोलिया में ये मीटिंग हुआ है. किसके लिए? डिफेंस कोलैबोरेशन को इंप्रूव करने के लिए. 12th एडिशन मीटिंग इंडिया मंगोलिया कंडक्टेड इन मंगोलिया, उलान बतूर. उलान बतूर इज द कैपिटल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मंगोलियन. मंगोलियन तुग्रिक is the currency, so capital currency is also important. Venezuela became the first country to lose all its glacier. Very painful news, very very painful news. Venezuela is the first country in the modern history to lose all its glacier after the climate scientists declared its remaining glaciers little more than an ice field. So Humboldt Glacier, which was also known as La Corona, also known as La Corona, was the last remaining one in Venezuela after the country lost at least 5 other in the past century due to the effect of climate change. लगभग 5 अपने ग्लेशियर्स खो चुका था वेनेजुएला. लास्ट वाला जो है आपका हम्बोल्ट ग्लेशियर विच इज ऑल्सो नोन एज ला कोरोना. स्टैटिक जीके के फॉर्म में भी आ सकता है. ला कोरोना वाज द ग्लेशियर विच वाज melted recently. It was in news recently. Located in which country? So it was located in Venezuela. ये भी आपका पिघल गया. रीजन है क्लाइमेट चेंज. वेरी वेरी पेनफुल थिंग, राइट? वर्ल्ड फर्स्ट 6G device launches in Japan. 20x faster than 5G. पहला 6G डिवाइस लॉन्च हो गया. Japanese consortium recently unveiled world first 6G speed prototype device. It can transmit the data of 100 gigabyte per second, covering more than 300 ft. So for us right now, so much details will not come in the examination because it is the initial phase of this news. So for now, currently the news will be world first 6G device prototype in a prototype मतलब अभी experimental phase में. So in a prototype version, it is launched by which country? Answer will be Japan. It is 20 times faster than 5G. 5G से 20 times faster है. 4,000 animal plant species affected by smuggling worldwide, according to the report of United Nations. So under the extinct category, because of smuggling, around 4,000 animals and species, plant species got affected. During the 6 year, around 13 million individual animal plant has been seized and had been intended use for food, medicine and luxury. मतलब ये जानवरों को और पौधों को एज अ लग्जरी, एज अ मेडिसिन और फूड खाने के लिए भी लोग यूज करते हैं. So because of trafficking, so human trafficking, drug trafficking, animal and plant trafficking. So this is the data which is presented by United Nations, that such type of activities have not decreased in the past 6 years. It is continuously increasing. इसमें कोई कमी नहीं आई है. ये continuously बढ़ता जा रहा है और worst होता जा रहा है with the time, and they have worst effect over the environment. क्लाइमेट चेंज का सिर्फ रीजन गर्मी बढ़ने से नहीं है. दीज आर द थिंग्स विच आर इंपैक्टिंग टू क्लाइमेट. वी आर मेकिंग इम्बैलेंस इन द एनवायरमेंट. हम बदल रहे हैं चीजें. चलिए, काफी न्यूज हो गए आज के लिए. छोड़ दूं या 2 मिनट और ले लूं? एक दो न्यूज और है, करवा दूंगा मैं फटाफट. इंडोनेशिया Semeru volcano erupt 5 times in 90 minutes. So recently, see, this will be a static GK question only. This is going to be a static GK question. The question will be like, Semeru volcano was under the news recently because of the continuous eruption. This volcano is located in which country? It is an active volcano at present. It is a active volcano.
तो एक्टिव वॉल्केनो होता है, डोरमेंट वॉल्केनो होता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होता है. एक्टिव वॉल्केनो मींस द वॉल्केनो व्हिच हैव कंटीन्यूअस eruption, that is active. Dormant means सोया हुआ, which is sleeping volcano, which have not erupted in the last 10 years. Anytime in the future it may erupt, nobody knows, so they are more dangerous. They are called dormant volcano. Third is called extinct. Extinct means which got erupted in the past or does not have any chance of eruption in future. So they are called extinct. This is the active volcano. So this Semeru volcano is the volcano located where in Indonesia. तो इंडोनेशिया में located है आपका volcano बस. वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18th ऑफ मई को ऑब्जर्व होता है, 18th ऑफ मई को. सो एड्स फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th ऑफ मई. अच्छा, वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट ऑब्जर्व करते हैं वो बताइएगा. इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18th ऑफ मई, अनदर वन. म्यूजियम फॉर द एजुकेशन एंड रिसर्च वाज द थीम ऑफ 2023. वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वी कॉल इट बीपी इन इंडिया, ब्लड प्रेशर बोलते हैं नॉर्मल टर्म में. तो 17th ऑफ मई था आपका बीपी डे. मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, दिस इज द थीम ऑफ 2024. बहुत प्रैक्टिकल थीम है. मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्टिवली, एक्यूरेटली एंड कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर. बिल्कुल सिंपल सा थीम है. अच्छे से मेजर करो, कंट्रोल करो, ज्यादा जियो, दिस इज द थीम. सो 17th ऑफ मई को हाइपरटेंशन डे. हाँ, एड्स डे 1st ऑफ दिसंबर है, वेरी गुड है. देन नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, इसीलिए यूएन का डेटा आया था. 4000 स्पीशीज प्लांट, वो वाला जो डेटा आया वो इसीलिए आया है. नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 17th ऑफ मई को ऑब्जर्व होता है. सेलिब्रेटिंग सेविंग स्पीशीज इज द थीम ऑफ 2024. सो ऐसे जो स्पीशीज हैं विच आर ऑलमोस्ट अंडर द सिचुएशन ऑफ एक्सटेंट, उनके लिए ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17th ऑफ मई. डिजिटल इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द थीम ऑफ 2024. डरना नहीं इंपॉर्टेंट डेज वाले न्यूज देखकर. इंपॉर्टेंट डेज जो होंगे आपके, इफ योर एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो मोस्टली वी विल बी कवरिंग द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ्स के हम अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे. एंड दैट इंपॉर्टेंट डेज आई विल रिवाइज यू around 40-45 important days. I'll revise you continuously with you continuously and you will be getting important days question from there only. वहीं से मिलेगा आपको important days का question. If you feel that the session was good, please like the session. It's a request to all of you. Subscribe the channel. Thank you for sharing the session with your friends. I know that you started sharing the session. Keep sharing for next few days. थोड़े दिन और कर दीजिएगा so they can, more people can get the idea about this session. And homework के questions हैं आपके पास, so answer them in the comment box. I'll be meeting you guys back in the next session soon. Till that time, keep watching Oliveboard. Jai Hind, all the best.